everyone, welcome to TechCube Gate Classes, an initiative by TechCube Faculty। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। So this is our lecture number 6 of our ordinary differential equation series. In our last 5 video or in our last 5 lecture, till now we covered the introduction of a differential equation, motivation of a differential equation, we covered the order degree, we covered the linearity, non-linearity of a differential equation. We also covered the formation of a differential equation, types of solution of a differential equation, types of problem of a differential equation. Also in our last 3 video, we covered the solution of a first order and first degree differential equation, in which we have covered few methods like variable separable method, homogeneous differential equation method, non-homogeneous differential equation method, exact and non-exact. In this video, we are going to learn or we are going to study the linear equation and the Bernoulli's equation. So आज के इस वीडियो में केवल हम दो ही मेथड के बारे में बात करेंगे, linear equation and Bernoulli's equation, which is a first order and first degree differential equation type. So let us start our first method, that is our linear equation. So सबसे पहले हम देखेंगे linear equation, that is our linear equation of first order and first degree. So a differential equation of the form like dy by dx plus px into y is equal to qx. This equation is said to be our linear differential equation of first order and first degree in the variable y. यहाँ पर मैं y के वेरिएबल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें y is our dependent variable and x is our independent variable. So that's why we are saying that this is our first order and first degree linear differential equation in terms of y. ये हमारी एक तरह की linear equation है। मैं इसे linear क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने देख चुके हैं कि ये जो equation linear की property को satisfy करेगी, that equation will be our linear equation. So हम देख सकते हैं ये equation, suppose this is the equation number 1, so ये equation हमारी linear की सारी conditions को fulfill करेगी, like the degree of dependent variable should be 1, the derivative of all or the degree of derivative of all the dependent variables should be 1 and they are not occurred together. In this case there is a two term, one is px and one is qx. तो यहाँ पर जो px है वो हमारी y की कोफिशिएंट है और जो राइट हैंड साइड में है वो हमारी q of x. So here px and qx are the function of x और constant. यहाँ पर हमारी जो px and qx होगी वो function of x होगी और constant हो सकती है. So are the function of x और constant. So इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे that is our linear equation in y of first order and first degree differential equation. Remember that यहाँ पर हमारी y जो है वो dependent variable है and x is our independent variable. Now we want to find the solution of this equation. So हम इसे कैसे find कर सकते हैं? So before finding the solution, हमें ये चेक करना होगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी. So ये जो हमारी इक्वेशन है that is the linear equation in y, this equation is our non-exact equation. So if some equation will be non-exact, that we know that for that case we have to find the integrating factor, and once you multiply the integrating factor with our differential equation, then our differential equation will become exact. तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये एक तरह की नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट क्यों हो रही है. तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म. सो लेट अस कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आवर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सपोज आवर इक्वेशन इज dy by dx plus pxy is equal to qx, where px and qx are the function of x or it can be constant. We want to write this equation in the form of some function into dx plus some function into dy. That means we want to write this equation in terms of mdx plus ndy, like in our differential form. So we can write dy plus px
y dx is equal to q of x dx. Now we can write the term or the equation in terms of the coefficient of dx and the coefficient of dy. तो यहाँ पर हमारी coefficient of dx क्या होगी, which will be our px minus y, sorry px into y minus q of x dx. This is the function which is look like p, which is a function of x, and also there is some term y. So this term will treat as a m. So m dx plus there will be some coefficient of y, so which is only a single term, that is dy. So if we compare, suppose this is the equation number 2, the given equation was 1. So this is the same equation of our equation number 1, but it is written in the form of differential form. अब इसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारे एग्जैक्ट है या नहीं है. If it is exact, then we can write the solution directly. If it is not exact, then we can find the integrating factor so that the equation will become exact and we can write the solution. So अभी हम इसे चेक करना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारे एग्जैक्ट है या नहीं. So if we compare this equation with m dx plus n dy, we will get the m will be our p of x into y minus q of x, और हमारी n क्या होगी, n equal to 1. Now we want to calculate the quantity, that is del m by del y and del n by del x, because we know that the necessary and sufficient condition, a differential equation of first order and first degree will be exact if the del m by del y is equal to del n by del x, where m is the coefficient, that is the differential coefficient of dx, and n is the differential coefficient of dy. So हम यहाँ पर del m by del y के वैल्यू निकाल रहे हैं, which will be simply p of x, which will be simply only p of x, because in this case px is a function of x and qx is a function of x. So यहाँ पर x को हम क्या समझेंगे, x हमारी कांस्टेंट की तरह काम करेगी. So del m by del y is equal to px, and what about del n by del x? यहाँ पर हमारी n 1 है, so del n by del x will be 0. So you can see that del m by del y is not equal to del n by del x. यानी यहाँ से हमारा कंक्लूजन हो रहा है कि दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बात आती है कि जब भी कोई इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी, उसके लिए हम इसे एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चूजिंग सम सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बताया था, सो हम 3 रूल के माध्यम से निकाल सकते हैं. यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है, विच इज नॉट फिटेड विथ आवर रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2. रूल 1 क्या था? रूल 1 इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वेयर एम एंड आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री. रूल 2 क्या थी हमारी? रूल 2 इस तरह के फॉर्म में थी, दैट इज y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई. So which is also not, if you see this equation number 2, which is also not fitted with our rule number 2. So we have one option, we should try to check using the rule number 3. So हमारी rule number 3 क्या है? हम कैलकुलेट करेंगे del m by del y minus del n by del x divided by either m or n, so that it will be the function will be in the form of x and y, and accordingly we can write our integrating factor. So now we are calculating del m by del y minus del n by del x. हमारे यहाँ पर del m by del y क्या है? Del m by del y is px and del n by del x is 0, so which is simply p of x. Now we can divide this quantity either with m or n. So if you divide with n, and if you are getting some function of x, then in that case the integrating factor will be e to the power of function of x dx. And if you divide with m, and if you are getting a function of y, in that case the integrating factor will be e to the power of minus the function of y into dy.
सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी del m by del y माइनस del n by del x जो निकली है वो हमारी px है. So now if you divide this quantity, that is del m by del y minus del n by del x divided by n, we will get a function in terms of x. अगर हम m से डिवाइड करेंगे, in that case that function is not in the form of y. So that's why after calculating we will choose the suitable m and n so that we can write in the form of either in the form of function of x and function of y. So del m by del y minus del n by del x and we are dividing with n, और हमारी n क्या है यहाँ पर n1 है. So this will be a p of x, यानी ये जो हमारी है एक तरह की फंक्शन बन रही है विच इज f of x, क्योंकि हमारी जो p है p is a some coefficient of y which is a function of which will be a function of either x or it can be some constant. So हमारी जो फंक्शन मिली del m by del y minus del n by del x divided by n, this is a function of x. So what will be our integrating factor? So हमारी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगी वो होगी e to the power of integration of fx dx. यहाँ पर fx क्या है हमारी, fx जो है हमारी p of x है. So this is our integrating factor. If this is the integrating factor, now we can multiply either equation 1 or equation 2 because these two equations are same equation. So if you multiply any one of the equation by integrating factor so that our equation will become exact. So हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, equation 1 को multiply कर रहे हैं with our integrating factor so that our equation will become exact. So multiply the equation number 1 with the integrating factor so that our equation will become exact. So multiply करने के बाद हमें क्या मिलेगा, so dy by dx into integrating factor, so dy by dx into e to the power of integration of px dx plus p of x y e to the power of integration of px dx, and the right hand side is our q of x. Now we can multiply this q of x with our integrating factor e to the power of integration of px dx. So now you can see that जो हमारी पहली एक्सप्रेशन है एंड दूसरी एक्सप्रेशन है, इन दोनों को हम सिंगल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, d by dx of, we can write it's a y into e to the power of integration of px dx. मैंने दो फंक्शन कंसिडर किया, y into e to the power of integration of px dx and we are taking the derivative of this one. If you apply the product rule, अगर हम product rule apply करेंगे differentiation का, so we will get these two term. Suppose we are doing the derivative. So first time we are keeping the constant as our e to the power of integration of px dx and we are taking the derivative of y. So in that case we will get dy by dx. For the second term, like in that case y as a constant and we are doing the differentiation of this e to the power of integration of px dx. So e to the power whatever the function, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, दैट इज e to the power of exponential of px dx, it will be same, and whatever the function the power, again we have to take the derivative of that one. So अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, since this is a integration term, so we will get only p of x. That means these two term we can write into a single term, that is d by dx y into e to the power of integration of px dx, and our right hand side, हमारी right hand side में क्या बची है, qx into e to the power of px dx. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं सॉल्यूशन लिख पाऊं, ताकि मैं जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर पाऊं. So now see this y into e to the power of integration of px dx, we can write d of this one and we can bring this denominator dx in the right hand side and we can take the integration of that one. So हम क्या लिख सकते हैं, the integration of d of y into, मैंने माना है कि ये जो हमारी e to the power of integration of px dx ये हमारी थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो नाउ आई एम यूजिंग दिस टर्म एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो मैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहा हूँ.
into dx, not dx because already there is a differential term, is equal to integration of qx into integrating factor into dx, and we will get some constant, that is plus c. So after integration, since this is a single differential term, so what we can write? We can write simply it's a y into integrating factor, and the right hand side will be our qx and integrating factor into d of x, यानी जो भी हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगी और हमारी जो राइट हैंड साइड में फंक्शन होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन लेना होगा, so that we will get this integral value and we will get our general solution. तो ये हमारी क्या बनी? जनरल सोल्यूशन है. दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y. याद रहे ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, दिस इज ए सम स्पेशल फॉर्म, दैट इज द लीनियर इक्वेशन विच इज इन y. हम इसे y में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में द डिपेंडेंट वेरिएबल इज y and there is only one dependent variable is present like y, so that's why we are saying that this is the linear differential equation in y of first order and first degree. यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई रहेगी, या तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सो इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली, दैट इज e to the power of integration of px dx, and we can write the general solution. और जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जो भी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल दी हुई है, here the dependent variable is y, so dependent variable into integrating factor is equal to the right hand side function, it can be function of x or it can be some constant, into integrating factor dx, the integration of this one plus c, that will be our general solution. So ये हमारी क्या बनेगी? This is our general solution or complete solution of first order and first degree differential equation. Okay, now I am going to discuss some working rule of this first order and first degree differential equation which is given in linear equation in y. तो suppose हमारी equation linear equation या हम linear equation in y में convert कर पा रहे हैं, so whatever the equation, if you are able to write in this form, that is dy by dx plus px into y is equal to qx. तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे दैट इज आवर लीनियर इक्वेशन इन y. तो जब भी हम ऐसा इक्वेशन को लिख पा रहे हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन इन y, सो फॉर दैट व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, वी कैन कैलकुलेट द सॉल्यूशन और वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन इन 3 स्टेप. So first we have to write the solution in the form of a dy by dx plus px into y is equal to q of x. If it is possible to write in this form, we can write in this form. उसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा. सिंस दिस इक्वेशन इज ए नॉन एग्जैक्ट एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी आवर e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ px dx. और ये हमने कैसे पाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर? क्योंकि ये इक्वेशन हमारी नॉन एग्जैक्ट थी और मैंने अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं. तो सिंस दिस इक्वेशन इज ए नॉन एग्जैक्ट, टू मेक इट एग्जैक्ट वी कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकली थी e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ px dx. वंस वी गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन. सो हमारी जनरल सॉल्यूशन क्या आ गई? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c. So this is the general solution. So कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन y में दिया हुआ है उसे हम 3 स्टेप के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, वी कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वी कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस the another form of a linear equation. Suppose in that case the linear equation is given in terms of x. In that case हमने माना है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y, यानी y जो है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो समटाइम्स यू विल गेट सम टाइम ऑफ इक्वेशन लाइक dx by dy प्लस p of y into x is equal to q of y. यहाँ पर जो हमारी x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है.
because the term is our dx by dy. So that represents that x is our dependent variable and y is our independent variable. So this is the linear equation or the linear differential equation in x. Remember that in that case only one dependent variable is there, that is x, और उसका जो coefficient होगा, that coefficient we assume that is p of y, so it will be a function of y or it can be constant. And the right hand side, since y is our independent variable, so that will be some function of y or it can be constant. तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. So here p of y and q of y are the function of y or constant. So in that case what will be the integrating factor? So ये भी इक्वेशन जो बनेगी, ये भी इक्वेशन हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, and we can make it exact by choosing or by finding some suitable integrating factor so that this equation will become exact. So यहाँ पर जो हमारी integrating factor बनेगी, that integrating factor will be, it's the e to the power of integration of py dy, and since here y is our independent variable, so we will take the derivative with respect to y. So e to the power of integration of py dy. So this is the integrating factor. And the general solution, we can directly write the general solution. ऐसी इक्वेशन जहां पर जो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में है, in that case what will be the general solution? Accordingly we can write our general solution. So the general solution will be dependent variable. Here our dependent variable is x. So x into integrating factor is equal to, the right hand side is some function of y or it can be some constant. So q of y into integrating factor, that is if dy plus c. So this is the general solution when some differential equation is given in a linear differential equation of x, where x will assume as a dependent variable and other variable here y will assume as a independent variable, right? So इस तरह की इक्वेशन को हम स्लाइटली चेंज करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो रिमेंबर दैट दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड फंक्शन इज आवर y, सो q of y into integrating factor d of y plus c. So this is the general solution. Okay, now I am going to discuss one example of linear differential equation and I'll show you how we can find the solution using finding the integrating factor, and we can directly write our general solution. Okay, suppose this is one example. The given differential equation is our x squared dy by dx plus 2xy is equal to 2 log x divided by x. So this is some differential equation given, which is our first order and first degree differential equation. Now you can see that we can convert this differential equation in terms of linear differential equation in x. हम इसे linear differential equation of x में convert कर सकते हैं, but in that case we have to remove the coefficient of dy by dx, because if you remember the working rule of our linear differential equation in x or y, there is no coefficient of derivative, so we should remove first the coefficient of this dy by dx. So इसके लिए हम क्या करेंगे, we have to divide the whole expression with x square. So हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, if you divide the whole expression with x square, so dy by dx plus 2x by x square, which will be our 2 by x into y and 2 log x divided by x cube. So this is our, now you can say that this is our linear differential equation in terms of y. This is the linear differential equation in terms of y. Now since this is a linear equation in y, so we can find
our integrating factor. So what will be the integrating factor? The integrating factor will be, it's a e to the power of integration of px dx. So अगर हम कंपेयर करें दिस इक्वेशन को, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 विच इज द लीनियर इक्वेशन, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. सो व्हाट विल बी द px? px क्या होगी हमारी? px होगी हमारी दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, so which will be our 2 by x. And what will be the q of x, which is our right hand side function of, so that function is either function of x or it can be constant. So here the function that is the right hand side is our, it's a 2 log x divided by x cube. हमने ये px और qx कैसे पाया? If you compare this equation with our linear differential equation in y, so the coefficient of y that will be our p of x, and the right hand side we assume that that is our some function, and that we assume that q of x. So the integrating factor हम क्या जानते हैं? e to the power of integration of px dx, e to the power of integration of px dx. So e to the power of, here px is our 2 by x and dx. So after calculating this one, that is the e to the power of integration of 2 by x, हमें क्या मिला? 2 log x integration of 2 by x, that is 2 log x. And after calculation we are getting the integrating factor is our x square, यानी हमारी integrating factor क्या निकली? x square. इसके बाद since this is the integrating factor, if you take this integrating factor and if you multiply the equation number 1, then our differential equation will become exact and we can find our general solution. Now we can write our general solution. So general solution क्या बनेगी हमारी? The general solution will be the dependent variable, यहाँ पर हमारी dependent variable क्या है? y. So y into integrating factor is equal to the right hand side function. So हमारी right hand side function क्या है हमारी? Which is our q of x, that is 2 log x divided by x cube. So 2 log x divided by x cube. और हमारी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी. दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन. नाउ वी वांट टू डू द सिंप्लीफिकेशन. सो हमें क्या मिलेगा? दिस इंटीग्रेशन विल बी आवर 2 log x डिवाइडेड बाई एक्स dx plus c. So now if you do the integration of this 2 log x by x, so 2 is a constant, and if you assume log x equal to some another variable, so in that case 1 by x dx will be that differential term. So we can write this integration of a log x by x, that will be our log x whole square divided by 2. How we are getting this one? Suppose we are assuming that log x equal to, suppose s. So in that case 1 by x d of x will be d of s, and we can write 1 by x ds equal to d of s, and since log x is our s, so s ds will be our s square by 2, and since s is our log x, so that's why it's a log x whole square divided by 2 plus c. अब यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, सो वी कैन राइट आवर जनरल सोल्यूशन नाउ. सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी जो फाइनल हमारी जो जनरल सोल्यूशन हुई वो हुई y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस सी. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ आवर गिवन लीनियर इक्वेशन इन y. Okay, next we are going to discuss the another form of a first order and first degree differential equation, that is the Bernoulli's differential equation. So Bernoulli's differential equation is a type of a non-linear differential equation of first order and first degree. ये जो हमारी Bernoulli's differential equation है, ये एक तरह की हमारी non-linear equation है. So इस non-linear equation को solve करने के लिए हम इसे convert कर सकते हैं in the form of a linear differential equation either in x or in y, and we can find the solution.
तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बार्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का फॉर्म कैसा होता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दैट इज dy by dx plus p of x into y is equal to q of x into y to the power of n. See here the extra term in the right hand side that is y to the power of n. ये इक्वेशन बिल्कुल लीनियर की तरह ही दिख रही है, बट राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा टर्म दैट इज y to the power of n, where n is constant and which is not equal to 0 and not equal to 1. अगर ये 1 n की वैल्यू 0 होगी, in that case that equation will become our linear differential equation, जो कि हम पढ़ चुके हैं. If n की वैल्यू 1 होगी, in that case this pxy and qxy these are the same kind of a term, so in that case we can combine these two one. So अगर हम बार्नौलीज इक्वेशन बोलेंगे, so there is a some term of y to the power of n and where n not equal to 0, if it is n equal to 0 then that will be our linear equation or the linear differential equation, and if n equal to 1 that term will can combine with our px into y. So apart from this n equal to 0 and n equal to 1, whatever the value of n that is some constant term, that form of a differential equation we call as a बार्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. हम इसे बार्नौलीज इक्वेशन इन y में बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल y है और यहाँ पर हमारा जो टर्म मिला वन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज ए सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, दैट इज which has some coefficient like p of x, और उसी का एक टर्म दैट इज y का पावर ऑफ समथिंग, दैट पावर it can be anything that power which is not equal to 0 and 1. So that equation is our Bernoulli's differential equation in y, and here px and qx, since y is our dependent variable, so that px and qx are the function of x or some constant. So this is our Bernoulli's differential equation. Suppose this is the equation number 1, हमने मान लिया this is the Bernoulli's differential equation in y. Now how we can find the solution? So we can find the solution by converting this नॉन लीनियर इक्वेशन. मैं इसे नॉन लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर y की जो पावर n है वो बताएगी कि दिस इक्वेशन इज ए नॉन लीनियर, बिकॉज नॉन लीनियर का कंडीशन का जो पहला कंडीशन है दैट इज द डिग्री ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 1. इफ यू आर नॉट टेकिंग एन इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो 0, in that case that equation will become our non-linear differential equation of first order and first degree, which is a one form of a non-linear differential equation. और जो हमने ये इक्वेशन लिखा है ये एक बार्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दी हुई है. Now we can convert this problem into a linear differential equation and we can find the solution. So इस मेथड को हम और भी एक नाम से जानते हैं, that is the equation reducible to linear form, because this equation is our non-linear differential equation. Okay, now we want to convert this problem into a linear form and then we can find the solution by whatever we know the linear equation in y. So ये जो हमारी equation दी हुई है that is our Bernoulli's differential equation in y. So if we convert this equation we will get a linear differential equation in y. So now how we can convert? So जब इसे हम convert करेंगे, our first idea will be that whatever the right hand side term that is y to the power of n, we will divide the whole expression with that term that is y to the power of n. So dividing, because we want to convert the non-linear equation into a linear equation, so dividing the equation number 1 by y to the power of n. So what we will get, हमें क्या मिलेगा, that is we are getting, or we can multiply the whole expression with y to the power of minus n. So we can write y to the power of minus n dy by dx plus px, यहाँ पर ऑलरेडी एक y का टर्म है, so that will be y to the power of 1 minus n is equal to q of x, और हमने सारे इक्वेशन को डिवाइड किया है y to the power of n, so now there is no term in the right hand side of y. After division, whatever the power of y, that is the dependent variable is our y to the power of 1 minus n, जो भी टर्म आएगी उसे हम मानेंगे with a new variable
that is a new dependent variable, and we can convert the problem with that variable and x. So suppose हमने मान लिया let y to the power of 1 minus n equal to z, so that this equation, this term, we can write px into z, and that will be a form of a linear form. So that's why we are taking y to the power of 1 minus n. Now we can take the differential of that one. So हमें क्या मिलेगा, 1 minus n, it's a y to the power of minus n, because 1 minus n and minus 1, so 1 and minus 1 will cancel, so we'll get y to the power of minus n, it's a dy by dx is equal to dz by dx. Here we have taken the differentiation with respect to x. ऐसा निकालने के बाद हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो जो पहली टर्म है दैट इज y टू द पावर ऑफ माइनस n इंटू डी बाई बाई डी एक्स, वी विल गेट दैट टर्म. सो नाउ वी कैन राइट y टू द पावर ऑफ माइनस n इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इट्स 1 by 1 minus n इंटू dz by dx. So suppose this is the equation number 2. So from 2 we can write this y and x in terms of our z and x. अब यहाँ पर हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगी, z, so that equation will become, it's a linear differential equation in z. So y to the power of minus n and dy by dx, that expression we can write, it's a 1 by 1 minus n dz dx plus px, and this y to the power of 1 minus n we can write into z, because हमने माना है y to the power of 1 minus n को z, and the right hand side is our q of x. अब ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल की तरह दिख रही है, बट फॉर दैट वी हैव टू रिमूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ dz by dx, यानी dz by dx का कोएफिशिएंट को हमें यहाँ पर रिमूव करना होगा. सो वी कैन राइट dz by dx प्लस 1 minus n px z is equal to 1 minus n into q of x. दैट मीन्स हमने इस इक्वेशन को 1 minus n से मल्टीप्लाई किया ताकि जो हमारा डिफरेंशियल टर्म है दैट इज dz by dx का कोएफिशिएंट 1 हो जाए. सो नाउ दिस इक्वेशन से dz by dx प्लस 1 minus n into px, 1 minus n क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म बनेगी, is equal to right hand side is our 1 minus n into qx. This whole equation is a linear equation in z. So this is the linear equation, ये बनी हमारी linear equation in z. This is the linear differential equation of first order and first degree in terms of z. So now we can find our integrating factor. So हमारी integrating factor क्या होगी, we know that the integrating factor will be e to the power of integration of the coefficient of dependent variable. So here the coefficient of dependent variable is our 1 minus n into p of x. So 1 minus n into p of x, that is our coefficient of our z, and we have to take, since here x is our independent variable, so we have to take the integration with respect to x. So ये हमारे integrating factor. So once we get the integrating factor, we can write our general solution. Since जो हमें revised linear equation मिला है, suppose करें कि this is our equation number, suppose this is the equation number 3. Suppose this is the equation number 3. So now we can write the general solution for the equation number 3. So हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर general solution? Here the dependent variable is z into integrating factor. The right hand side function is our, right hand side function हमारी है 1 minus n into q of x. So 1 minus n into q of x into integrating factor d of x plus c. This will be our general solution. But यहाँ पर हमें एक चीज को और कन्वर्ट करना होगा, since this is the solution in terms of z and x. So हमें इस z को भी रिमूव करना होगा, because the problem is given in terms of x and y. So what is z? Here the value of z is our y to the power of 1 minus n.
So y to the power of 1 minus n into integrating factor is equal to integration of 1 minus n qx into integrating factor dx plus c. So this is the general solution when the given Bernoulli's equation will be in y. So अगर हमारी Bernoulli's equation in terms of y में दी हुई है, in that case the general solution will be it's a y to the power of 1 minus n into integrating factor is equal to the right hand side function will be it's a integration of 1 minus n into q of x into integrating factor dx plus c. So this is the general solution of our Bernoulli's differential equation in terms of y. So this is the this is our general solution. This is the general solution of our given Bernoulli's differential equation. अब अगली चीज आ रही है हमारी कि सपोज करें कि हमारा इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में भी हो सकता है कि Bernoulli's differential equation in x में हो. So in that case accordingly we can find or accordingly we can write or accordingly we can convert the problem in terms of linear equation in that variable. So suppose as a remark, suppose the Bernoulli's differential equation is given in terms of x, तो उसका फॉर्म कैसा दिखेगा? A differential equation of the form, हम यहाँ पर मान रहे हैं कि x as a function of y, where y is our independent variable and now x is our dependent variable. So differential equation of the form like dx by dy, तो इससे हम क्या समझेंगे कि x हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इन दैट केस p will be function of y which is the coefficient of our dependent variable x is equal to the right hand side will be it's a q of y into here x to the power of n, because this is the Bernoulli's equation in terms of x, यानी x की पावर कुछ होगी and that n not equal to 0 and not equal to 1, otherwise that equation will be not in Bernoulli's differential equation. So this type of equation is said to be Bernoulli's differential equation. इसे हम बोलेंगे Bernoulli's differential equation in x, because here the dependent variable is our x. So accordingly we can convert this problem in our linear differential equation in terms of x. So इसके लिए हमें क्या करना होगा? We have to divide the expression with our x to the power of n and accordingly we will get some term of x that is x to the power of 1 minus n और उसे हम मानेंगे another variable में, किसी other variable में, and we can convert the problem in terms of y and that variable. So यहाँ पर भी हम same process लगा के same method लगा के solution कर सकते हैं. In that case the only thing is that यहाँ पर जो x है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी एंड y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी एंड दिस इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. तो जब भी इस तरह के फॉर्म में दी हुई रहेगी उसी तरह हम अकॉर्डिंगली वी कैन डिवाइड the whole expression with x to the power of n and we can find the general solution. Okay, now I am going to take one example and I will show you how we can find the solution using our Bernoulli's differential equation. So suppose the equation is given dy by dx plus 1 by x into y is equal to the right hand side function is our x square y cube. ये हमारी एक तरह की इक्वेशन दी हुई है. This equation is our first order and first degree differential equation. So now if you notice this equation is our Bernoulli's differential equation in terms of y, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और राइट हैंड साइड में वी आर गेटिंग समथिंग y to the power of 3. So this equation और this is Bernoulli's differential equation in terms of y.
सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, फर्स्ट विल डिवाइड द होल एक्सप्रेशन और द एक्सप्रेशन नंबर 1 बाई y टू द पावर ऑफ q। जो भी यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड में है उससे हम डिवाइड करेंगे। याद रहे कि y की जो भी पावर होगी वो 0 और 1 को छोड़कर हो सकती है। सो डिवाइड द होल एक्सप्रेशन बाई y टू द पावर ऑफ q एंड वी विल गेट, और वी आर गेटिंग, हमें क्या मिलेगा, y टू द पावर ऑफ -3 dy by dx plus 1 by x, here y to the power of 1 minus 3 which will be y to the power of -2, and the right hand side will be it's a simply x square. Now जो हमारी टर्म मिली है that is y की सेपरेट टर्म that is our dependent variable, इसे हम मानेंगे in terms of other variable. So we are assuming that y to the power of -2 equal to something z. So हमारी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या टर्म मिल रही है, -2 y टू द पावर ऑफ -3 dy by dx is equal to dz by dx. So that means y to the power of -3 dy by dx, it will be equal to -1 by 2 into dz by dx. So what we can write our differential equation? So we can write our differential equation. मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, y टू द पावर ऑफ -3 dy by dx, दैट टर्म विल बी dz by dx। यानी जो इक्वेशन 2 है उसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z। सो y टू द पावर ऑफ -3 dy by dx, दैट वैल्यू विल बी आवर -1 by 2, इट्स a dz by dx। एंड व्हाट अबाउट द अदर थिंग, plus 1 by x and y to the power of -2. So plus 1 by x, y to the power of -2 को हमने माना है z is equal to the right hand side is our only x square. Now we can remove this -1 by 2 by multiplying the whole expression with -2. So अगर हम -2 से इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे so that we can remove our the coefficient of derivative term. So we can write dz by dx, it's a -2 by x, z is equal to -2x square. So now this is our linear equation or the linear differential equation in terms of z. यहाँ पर हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z, and इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारी है वो x. So now we can find our integrating factor. So what will be the integrating factor? That integrating factor will be e to the power of integration of the coefficient of z, the coefficient of dependent variable, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारी z है, एंड इसका कोफिशिएंट है -2 by x which is a function of x. So we are getting e to the power of -2 log x, और हमारा मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर which will be 1 by x square. Now we can write our general solution in terms of z for this linear equation in terms of z. So we can write the general solution. So हम general solution कैसे लिख सकते हैं, z into that is the dependent variable into integrating factor, यहाँ पर हमारी integrating factor जो है वो 1 by x square है, is equal to the right hand side is our -2x square into 1 by x square, it's a dx plus c. So we are getting this x square and x square will cancel, so -2 dx which will be -2x and plus c, and the left hand side is our z into 1 by x square. So हमारी z क्या है, क्योंकि हमें जब सॉल्यूशन लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ y एंड x. तो z हमने क्या माना था, वी assume that z equal to y to the power of -2, that is 1 by y square. So we can write 1 by x square into 1 by y square, because the value of z is our 1 by y square, is equal to -2x plus c. This is our general solution of the given Bernoulli's differential equation in terms of y. यानी जो हमारी ये Bernoulli's equation दी हुई थी जो कि in terms of y में थी, that is the Bernoulli's differential equation in y,
जो कि एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसे हमने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एंड देन वी गेट आवर सॉल्यूशन. So this is the process to find the solution when some differential equation is given in Bernoulli. याद रहे Bernoulli differential equation is a type of a non-linear differential equation of first order and first degree, और इसे हम convert कर सकते हैं linear differential equation में, and then we can find the general solution of our differential equation. Okay, so now we are going to solve some problem which has asked in GATE question paper. So this is one question which has asked in GATE 2021 of civil engineering paper, and the question is from set 2, and the weightage of the question is our 2 marks. So question क्या है? If k is a constant, the general solution of dy by dx minus y by x is equal to 1 will be of the form of y is equal to x log kx, y is equal to k log kx, y is equal to x log x, and y is equal to x k log k. अब हम इसे देख सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, दैट इज dy by dx minus y by x equal to 1. This is a first order and first degree differential equation. So we can solve various method, but here we want to apply the linear equation because हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में दी हुई है. सो सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, हमने माना दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सो दिस इज a linear equation in y. So after solving, that means we want to find the solution using the linear equation in terms of y. So हमें px क्या होगा हमारा, px जो होगी हमारी कोफिशिएंट ऑफ y होगी, दैट इज आवर -1 by x, and qx will be 1, that is our right hand side function. So we can solve this problem using our linear differential equation in y. So what will be the integrating factor for this? What will be the integrating factor for this? The integrating factor will be e to the power of integration of -1 by x dx, because यहाँ पर px क्या है, that is our coefficient of y which is our -1 by x. So we can write e to the power of minus log x, and that will be our 1 by x. यानी हमारी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो 1 by x है. अब हम क्या लिख सकते हैं, we can write our general solution. So general solution for this linear differential equation in y, we can write the dependent variable is our y, यानी dependent variable हमारी y है into integrating factor. So integrating factor क्या निकला हमारा, 1 by x is equal to the right hand side is our, it's a 1, so we can write 1 into integrating factor, that will be our 1 into integrating factor, that is 1 into 1 by x dx plus c. So now after simplification, what we can write, y by x and this integration of 1 by x dx, that will be our log x. यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट है ना वो दिया हुआ है कि k is a constant, that is our arbitrary constant. So accordingly I am choosing this c equal to as a log of k, right? हमने मान लिया कांस्टेंट हमारी क्या है, log of k, so that we can write this two term together and we can write log of k of x. और हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है which is our y by x, so हम इसे लिख सकते हैं y is equal to x into log of kx. So this is the some general solution of the given differential equation like dy by dx minus y by x equal to. Now we are checking the option. यहाँ पर ऑप्शन ए क्या बोला है, y equal to x into log kx, यानी यही ऑप्शन हमारा फिट हो रहा है. We can check other option also. See the option B क्या है हमारे, y is equal to k log kx, यानी k आ रहा है, जबकि हमारा वहाँ पर k एक ही टाइम पर आएगा, यानी this answer will not be possible. y is equal to x log x, यानी यहाँ पर कोई k का ऑप्शन है ही नहीं, यानी k कोई कांस्टेंट है ही नहीं, and D is our y equal to x k log k. This is also not possible because we are getting the solution like it's a y is equal to x log kx. log kx के बाहर एक केवल सिंपल सा टर्म मिलेगा, that is our x. So that means our
ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट, यानी ऑप्शन जो ए होगी वो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन विच हैज आस्क्ड इन गेट 2021 इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पेपर एंड द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन इज 1 मार्क। तो क्या दिया हुआ है? द क्वेश्चन इज दैट द कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बिलो, दैट इज dy by dx plus x by 1 minus x square into y is equal to the right hand side is our x into square root of y. The question is that find the integrating factor, that is the integrating factor of the differential equation is our 1 minus x square to the power of minus 3 by 4, 1 minus x square to the power minus 1 by 4, 1 minus x square to the power of minus 3 by 2 and 1 minus x square to the power minus 1 by 2. So in this question we have to only find the integrating factor. हमें केवल integrating factor ही निकालना है, ना कि इस differential equation का हमें solution करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, this equation is our Bernoulli's differential equation. Why it is Bernoulli's differential equation? Because the dy by dx some function of x into y is equal to some function of x and here the one term of y, that is y to the power of 1 by 2, यानी जो square root of y है इसे हम लिख सकते हैं y to the power of 1 by 2. So this equation is of the form of Bernoulli's differential equation in terms of y. So जब हमें इसे integrating factor निकालना है, so we have to convert this differential equation in terms of linear differential equation in y and then we can find our integrating factor. So suppose this is the equation number 1. So for that what we have to do, अगर Bernoulli's equation अगर हमें solve करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस इक्वेशन को, यानी जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए जो भी हमारी राइट हैंड साइड में दी हुई है y की पावर, उससे हमें डिवाइड करना होगा। सो दैट इज वी आर डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन विथ y टू द पावर ऑफ 1 by 2 और वी कैन से दैट वी आर मल्टीप्लाइंग द होल एक्सप्रेशन विथ y टू द पावर ऑफ -1 by 2. सो व्हाट वी कैन राइट, y टू द पावर ऑफ -1 by 2 dy by dx plus x by 1 minus x square y to the power of 1 into minus 1 by 2, that will be y to the power of 1 by 2 and the right hand side is x. इसके बाद जो भी हमारी y की टर्म, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल की जो फ्री टर्म बची हुई है उसे हमें एज्यूम करना होगा, सो दैट वी विल गेट आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म and we can convert in terms of our linear equation. So we are assuming that y to the power of 1 by 2 is equal to z. So now what will be the derivative of this, that is 1 by 2, it's a y to the power of -1 by 2 dy by dx, we are taking the derivative with respect to x is equal to dz by dx. That means we can convert the problem y of x in terms of z of x. So now this y to the power of -1 by 2 into dy by dx, we can write it's a 2 into dz by dx. So 2 into dz by dx, we replacing the value of y to the power of -1 by 2 into dy by dx equal to 2 into dz by dx. तो हम यहाँ इस इक्वेशन को सपोज करें कि इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन को हम कन्वर्ट करें in terms of z, so that that equation will become the linear differential equation in terms of z. Okay, other term क्या बचा हमारा, plus x by 1 minus x square and y to the power of 1 by 2. That y to the power of 1 by 2 we assume that is our z. So that will be z and the right hand side is our x. So now we can write dz by dx, because we have to remove also the coefficient of dz by dx. So dz by dx plus it's x by 2 into 1 minus x square z divided by x by 2. हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, so that there is no coefficient of dz by dx. Now this is a linear equation in terms of z. So हमें केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ना कि सॉल्यूशन, because the question is based on only we have to find the integrating factor. So integrating factor will be e to the power of integration of, since this is the linear equation in terms of z, so e to the power of the coefficient of z will be our x by 2 1 minus x square dx.
नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. सो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वी एज्यूम दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम वेरिएबल, सपोज s हमने माना. सो माइनस 2x dx will be it's a d of s. That means x dx we can write d of s, and that 1 minus x square we can write s. So that whole expression will be to the power of, see, 1 by 2 is already there, and x dx will be our minus 1 by 2 ds. So we can write minus 1 by 4 integration of ds divided by s, because x dx is our ds by ds by minus 2, which will be minus 1 by 4, and ds by s. This ds by s, the integration of this ds by s will be log s, and here s we assume that it's a 1 minus x square. So what we can write, we can write this log of 1 minus x square to the power of minus 1 by 4, and we can cancel this exponential and log term. So we can write 1 minus x square to the power of minus 1 by 4. That means this is the integrating factor. So now we are checking the option. हम यहाँ देख सकते हैं, the first option is our 1 minus x square to the power of minus 3 by 4. That means this is not correct. 1 minus x square to the power of minus 1 by 4. That means this will be correct. Other thing you can also check, 1 minus x square to the power of minus 3 by 2, which is not correct, and 1 minus x square to the power of minus 1 by 2, which is also not correct. That means option B is our correct. So इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो गेट में आते हैं कि जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन एंड बार्नोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन से. तो दिस टू टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू इन एवरी स्ट्रीम ऑफ आवर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस लेक्चर. सो इस लेक्चर में हमने देखा लीनियर इक्वेशन के बारे में, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x में हो सकती है और लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y में हो सकती है. अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वी कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन. इस लेक्चर में हमने ये भी देखा बार्नोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन, which is a type of a non-linear differential equation, and we can convert this Bernoulli differential equation into linear equation, and we can find the general solution. This both linear equation of first order and first degree, also the Bernoulli differential equation, are both equation. It is a type of a non-exact differential equation, इसलिए हमें यहाँ पर बार बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ी. So this is the summary of this lecture. So I hope you enjoyed this video. So if you have any doubt or any query, please do the comment on our comment section. So till then, do more and more practice. So thank you for your time and keep watching the video. So now this is the time to say bye to all.